today, see, here is a story about a small boy. My dear students, first of all, see on the page 36, Chinua Achebe was a Nigerian author who wrote novels, short stories, poetry, and children's books. Chinua Achebe, ये Achebe, ये जो नाइजेरियन है, ये सी एच को ये शीन की आवाज भी देते हैं, राइट? So Yeshenwa Ashbe या फिर Chinua Achebe was a Nigerian author who wrote novels, short stories, poetry, and children's books. So see, part one, read the summary of the story so far. Who is the main character? ये साथ ही question पूछा. Who is the main character in the story? What is its ambition? Character कौन है और फिर उसकी ambition क्या है? बेटे, we are unable to know about the main character. We are unable to know his ambition, okay, until we read out the summary. So let's see what is written in the summary, the story so far here in the block. See, ये again इसका नाम देखिए, ये चाय है या फिर चिके है, right? क्योंकि हम इनके नामों को अच्छी तरह से तो नहीं जानते. अलबत्ता हम इसको चाय भी पढ़ सकते हैं, चिके भी पढ़ सकते हैं. तो हम इसको जो है वो चलिए चिके ले लेते हैं. Chike and the River is a story about an 11-year-old boy called Chike who lives with his mother and two sisters in the village of Umuofia in Nigeria. His mother sends him to live with an uncle in Onitsha, a city on the river Niger. Chike is so excited because he's always wanted to see the river ever since he heard a story about it as a young child. But his mother tells him he must never go near the river. Chike lives with his uncle and his uncle's servant, Mikhail, and he goes to school in Onitsha. He wants to cross river on a ferry. Ferry is a small ship. He asks his uncle for the money for the fare, and the fare is only 1 shilling, but he won't give it to him. Shike is determined to find a way to get the money for the crossing. ये शॉर्ट स्टोरी है कि वो अपने अंकल और उसके सर्वेंट के साथ रहता है और उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो जो है वो फेरी के ऊपर इस रिवर को क्रॉस करे और वो उसको देखना चाहता है. एक तो ये है कि उसकी मदर ने उसको रिवर पर जाने को मना किया हुआ है. दूसरा, उसके पास पैसे नहीं है. वो अंकल से पूछता, वो पैसे उसको नहीं देता. बट उसकी एम्बिशन हमें ये मालूम होती है. मेन कैरेक्टर कौन सा है? मेन कैरेक्टर चिके है और उसकी जो एम्बिशन है वो है टू क्रॉस द रिवर ऑन अ फेरी. ओके जी, लेकिन what happens, he won't give it to, अच्छा ओके, चिके is determined to find a way to get the money for the crossing. कि वो कहीं ना कहीं से पैसे हासिल कर लेगा. अच्छा जी, ये हमें स्टोरी इसका पता चल गया, राइट? नाउ सी नेक्स्ट पार्ट. रीड part 2, read chapter 13 of the story. 13 next page पर है, 37 पर. I do hope that you would be handling your textbook in your hands and you would have opened it, page number 36 and 37. So see here on page number 37, chapter 13, Chike's the dream comes true. तो ये स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तो हमें जो है वो और भी बातों का पता चलेगा. तो ये कि read story 13 of the read chapter 13 of the story and an extract from chapter 14 on page 37. Why is chapter 13 called Chike's dream comes true? तो ये स्टोरी जो है, चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. बेटा, what happens, one day
Chike finds a chance to go to visit the river Niger. Okay, and he sees over there that two boys are washing the cars. Okay, and after washing the cars, the car owners give something to those two boys. In this way they are earning and getting the money. He thought, why I couldn't do the same? So he returns back to his home. Okay, takes a bucket and comes to the shore, but he doesn't know how to talk about washing the car to the owner of any car. So a car comes over there. He goes near to that, but he doesn't talk um, to the owner. But those two boys came immediately to their man, and they did tell them that they can wash his car. So he says, "Okay, go on and wash my car." So in this way, he missed one chance. He missed one chance of that, but he's determined. Okay, for the second time, a small car comes over there, and he immediately goes there and tells that he can wash his car. The man says, okay. So after washing the car, he gets 1 shilling from that man, and in this way, he pays the fare of the ferry, and he enjoys the crossing the river. In this way, Chiki's dream comes true. Okay, beta. Now see question number 3. Read the extract again, then answer the questions. Question number 1. Chiki's chance come suddenly. Read the extract again, then answer the questions. Okay, beta. First question is, let me see the questions. Chiki's chance comes suddenly to his chance to do what? Who is the man? अच्छा बेटा, मैंने जो इस वक्त मैं दोनों चीजों को इस वक्त मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बुक को और स्क्रीन को. सो क्वेश्चन इज, हु इज द मेन कैरेक्टर. मैं सबसे ऊपर वाले जो मैंने इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. दैट इज, who is who is the main character in the story. So main character is Chike, and his ambition is to visit the river Niger and cross it in a ferry. Just wait a bit. Wait. Okay. Right. Chike is the main character in the story, and his ambition is to visit the river Niger and cross it in a ferry. Why is called chapter 13 Chike's dream come true? ये जो चैप्टर 13 है, इसको चिके's ड्रीम कम ट्रू का क्यों नाम दिया गया है? So because the chapter 13 tells that Chike's dream came true in the end, he remained successful in visiting and crossing the river Niger. Now अब देखते हैं बेटा, ये है question, answer the questions. Chike got a sudden chance to go to the river Niger. Question number 1's answer is, Chike got a sudden chance to go to the river Niger. Question क्या है? Chike's chance came suddenly. His chance to do what? उसको जो अचानक एक चांस मिलता है, तो किस हवाले से जो है वो चांस उसको मिलता है? तो बेटा ये है, Chike got a sudden chance to go to the river. Second
Question: What idea did GK get from watching the three boys? आप अपनी बुक पर देख सकते हैं. I have just written the answers. GK got an idea from the three working boys of getting money. What idea did GK get from watching the three boys? GK got an idea from the three working boys of getting money. Question 3. What did GK learn from watching the boy who cleaned the enormously long car? GK learned from the boys how to wash cars. Question 4. How would you describe the way GK approached the owner of the small car? GK reached the owner of the small car without any delay or wastage of time. Question 5. How does GK make sure he gets paid? When the man looked at GK and put his hand in his pocket, GK was sure of getting paid. Question 6. Why does GK feel as proud as Mango Park? Answer is GK was looking as proud as Mango Park because when Mango Park explored the river Niger, he was happy and proud of his exploration. Beta Mango Park actually was a Scottish explorer of Africa. इसका दुरानी है 1771-1806. He explored the river Niger and he was very happy when he explored the river Niger. So इसलिए राइटर ने जो है उसके साथ एग्जाम्पल दी है कि वो ये बच्चा भी इतना खुश था जितना कि मंगो पार्क. I would like to your screen, please. Okay. Next. Discuss these questions. Slide 3. Peter, part 4. Working in groups. Discuss these questions. कि ये जो questions हैं इनको discuss कीजिए. So first question, you can see on your screen, please. How does the author make GK a sympathetic character? Author ने उसको एक sympathetic character कैसे बनाया है? The answer is the writer makes GK a very sympathetic character, describing him a child who lives with his uncle, or with an uncle भी आप लिख सकते हैं. ये लिखा हुआ with an uncle and his servant in a city near the river Niger, having no money in his pocket to spend to fulfill his dreams of visiting and crossing the river in ferry. Question number 2 and 3 are supposed to be attempted by the students. Let's see. Is there a particular story you remember from your childhood? What is it? बेटा ये आपकी अपनी किसी स्टोरी के हवाले से लिखा हुआ है. If you're having or if there has been any ambition in your life. Okay. So is there a particular story you remember from your childhood? अगर कोई ऐसी स्टोरी आपके बचपन से जिस तरह से इस बच्चे की एक एम्बिशन थी, एक स्टोरी थी, व्हाट इज इट, तो वो क्या है? तो वो मैंने यहाँ पर आपके लिए स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 2 जो है that should be attempted by the students. Question 3 भी same है. Is there something you dreamed of doing since you were a child? बचपन से कोई काम करने का कोई ख्वाब रहा हो, व्हाट इज इट, वो क्या है, आप उसके बारे में बताएंगे. Question 4. Why do rivers fascinate people? Okay. As rivers क्यों fascinate करते हैं ये देखते हैं. As humans we are drawn to water
We are attracted to the ocean and the sound of running water from our childhood. The motion of its movement calms us. Number one. Number two, as we get older, we still enjoy the fun sight of water, but we also start to realize how important the ocean is to every human life. Water provides fresh water, oxygen, and helps moderate the Earth's climate, weather, and health. Note कीजिए, right now, perhaps this answer is not on your screen, please, but see, let me tell you once again. As humans, we are drawn to water, we are attracted to the ocean and the sound of running water. Okay, actually, I'm telling you about the question. Question is, why do the rivers fascinate the people? So I'm telling you why rivers fascinate the people. So as humans, we are okay. Heather, question is, why do the rivers fascinate the people? So I'm telling you that the rivers fascinate the people because as humans, we are drawn to water. We are attracted to the ocean and the sound of running water from our childhood. The motion of its movement calms us. Mean motion of water, motion of running water. Okay, its movement calms us, and as we get older, we still enjoy the fun at the side of water. But we also start to realize that how important the ocean is to every human life, right? These running waters also provide us fresh water, oxygen. I mean, these rivers, fountains, waterfalls, okay? All these things provide us fresh water, oxygen, and helps moderate the Earth's weather, climate, weather, and health. ये पानी जो है ये हमें ताज़ा पानी भी देते हैं जैसे कि फाउंटेन्स हैं ओके स्मॉल जो है वो नदियाँ फाउंटेन्स ओके वाटरफॉल्स ये सब साफ पानी देने वाले वाटर चैनल्स हैं ये हमें फ्रेश वाटर भी देते हैं राइट और जो है इनकी वजह से पौधे दरख्त और इस तरह से हम ऑक्सीजन भी हासिल करते हैं एंड हेल्प्स मॉडरेट द अर्थ्स क्लाइमेट और ये सारी चीज़ें मिलकर हमें अर्थ की क्लाइमेट को मॉडरेट करने में इसके वेदर को मॉडरेट करने में और हमारी अपनी इंसानों की हेल्थ को मॉडरेट रखने में और मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं राइट बेटा ओके ओके जी यहाँ पर जो है हमारा ये लेसन बेटे ख़त्म होता है इसके अलावा इसमें और कोई बात नहीं है आप सिर्फ पेज नंबर 37 पर ज़रा ये देखिए बिल्कुल एट द राइट हैंड इसके बिल्कुल साइड पर जो है वो कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स दिए गए हैं ठीक है ये कॉलम में देखिए पेज नंबर 37 फेरीड ये लाइन 7 में आएगा और इसका मतलब है टेकन बाय फेरी rag a small piece of old cloth utter complete used to emphasize something utter mean utter जो है वो कुछ कहना भी होता है okay are you following me to say something और दूसरा इसका मतलब complete भी होता है used to emphasize something revived brought back to life pulled up लाइन 15 में आप इसकी स्टोरी में देखेंगे pulled up stopped when talking about cars okay जब हम गाड़ी वगैरह के बारे में बात करेंगे तो अगर वो रुकती है तो pulled up
boldness, not being afraid of taking risks. Boldness, not being afraid of taking risk लेने से खौफजदा नहीं होना, बहादुरी. Hesitated, waited before doing something. Marched up to, walked towards, in a determined way. Walked towards in a determined way. मुश्किल मिजाजी से किसी जाने बढ़ना. Okay. Make I wash your car. ये ब्रोकन इंग्लिश में ये दो बच्चे जो हैं वो उन कार वालों से बात करते हैं, उनको सही इंग्लिश बोलना नहीं आती, मगर ये जो चिके ये सही इंग्लिश में बात करता है, लेकिन उनकी कही हुई बात जो डायलॉग है वो यहाँ पर देगा. मेक आई वॉश योर कार मीन मे आई वॉश योर कार. होगा योर कार डॉट प्लेंटी, आई फिट वॉश एम फाइन. ये भी जो है ये अपने अंदाज में उनकी रॉन्ग बोली गई इंग्लिश है. सर योर कार इज वेरी डर्टी, आई कैन वॉश इट वेरी वेल. Choosy, choosing carefully, leaving out what is not so good. Shifting, line 31 में आएगा, moving from one position to another. Second last is shilling, a coin used in the past. Mungo Park, ये जो भी जिसके बारे में बात कर रहे थे, okay, that's the Scottish explorer of Africa. He explored the river Niger. So this is the end of the lesson. हमने इसके word meanings भी पढ़ लिए, और बेटा still if you are having any confusion regarding this, please share with me through your SMS box. I would like to see. Okay, tell me, children, it's all right? Everything is clear to you, please? I'm waiting for your SMS. जी, all students are in front of me. जी बेटा, ताबिया, बिशे, एडन, ईमान, अमना, अंसा, सबको क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जकरिया, यशब, सानिया. If everything is clear to you, please. Okay, just only one, sir, we have to do, meaning you're all clear. No problem, sir. Okay बेटा. So बेटा yes, आप इसके वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा. ओके, बिकॉज as soon as we turn back to school, अगर आपके एग्जाम होते हैं तो आप अगर हमारे पेपर प्रिपेयरर जो होंगे, जो बनाएंगे इनको पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर, वो उनके मीनिंग्स को देते हैं, तो फिर आपको ये आने चाहिए, राइट? आप एज अ नोट्स आप अपनी कॉपी में आप इसको लिखेंगे. ओके बेटा, थैंक यू सो वेरी मच. आप सब ने इसको लिखा कि एवरीथिंग इज क्लियर. ओके, थैंक यू सो वेरी मच. इसके बावजूद अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज नोट डाउन इन योर रफ कॉपी. Okay, and in tomorrow's class, inshallah, we'll discuss it with you. Okay, right. So yet we are having 6 minutes in our hand. अभी हमारे पास 6 minutes बाकी हैं. तो चलें नेक्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बेटा. पेज नंबर 38 को जरा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यू ऑफ यूनिट्स 3 and 4.
अभी आपके सामने जो है वो इसकी स्क्रीन शेयर भी हो जाएगी, बल्कि हो गई। सी, ओके बेटा सिर्फ एक सेकेंड। ओके बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है हम रिव्यू ऑफ यूनिट 3 एंड 4 को देखेंगे। अभी आपके सामने है complete the sentences with the words from the box, from the box। तो बेटा यहाँ पर बॉक्स में देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। ये हमारे यूनिट 3 एंड 4 में से ही लेकर ये रिव्यू ऑफ यूनिट 3 और 4 जो है वो प्रिपेयर किया गया है, एंड जस्ट वी आर सपोज टू अटेम्प्ट इट। ओके बेटा, आपकी स्क्रीन पर है पार्ट 1, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो बॉक्स में क्या है? बैंक्स, कोस्टलाइन, फ्लड्स, फ्रेश वाटर, रेनफॉल, सॉल्ट वाटर। ठीक है, ये रिवर्स एंड कोस्ट जब हमने पढ़ा था तो ये सारी चीजें उसमें मौजूद थी। ओके, ऑल दीज थिंग्स वर ओवर देयर दैट ऑलरेडी वी हैव स्टडीड। सो सी, हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, यू यूजली फाइंड। अच्छा, पहला जो है वो आपकी स्क्रीन पर, वो भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, you usually find blank in rivers and lakes whereas the seas and oceans have फिर blank है। तो ये है, पहली तो ऑथर ने आपके लिए लिख दी और दूसरी आपको करनी है। तो बेटा आप पहली जो टू ब्लैंक्स है उनमें फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर लिखेंगे। You usually find fresh water in rivers and lakes whereas seas and oceans have salt water। ओके, सॉल्ट वाटर। टू, टू में आएगा पीपल हैव लिव्ड लॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर, बैंक्स ऑफ द रिवर, बैंक्स ऑफ द रिवर नाइल फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। मैं इसको मुकम्मल पढ़ देता हूँ। पीपल हैव लिव्ड along the banks of the river Nile for thousands of years। Third, the east of Malaysia has a beautiful coastline with lots of lovely beaches। Fourth, one of the wettest places in South America is Lor Loro, sorry ये Loroi, ऊपर छोटा से कॉमा है, Loroi in Colombia, where the annual rainfall is about 13,000 millimeters। Rainfall, 4 में rainfall आप इसको फिल करेंगे। Fifth is floods can cause problems for people who live near rivers। तो बेटा फिफ्थ में इस फिल इन ब्लैंक में आप फिल इन करेंगे रेनफॉल, where the annual rainfall is about 13,000 millimeters। सॉरी 4 में, और फिफ्थ में floods can cause problems for people who live near rivers। ओके जी, हमारा ये पार्ट जो है यहाँ पर खत्म होता है। क्वेश्चन 2 is also very interesting। Put these sentences in the correct places in the description। बेटा पेज नंबर 38 है। Put these sentences in the correct places in the description of the water cycle at the top of the next column। यहाँ पर जो है ये जो है ये क्लॉजेस दी गई हैं, आपने इसके साथ ऊपर दिए गए द वाटर साइकिल, ये छोटा सा ब्लॉक है बेटा, इसमें खाली जगह है, आपने यहाँ पर पुट करके इसको मुकम्मल करना है। ओके, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में है क्या? ए, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बी, द साइंटिफिक वर्ड फॉर दिस इज
precipitation. C, precipitation भी आप इसको कहेंगे. C, they are blown inland by the wind. D, this is called runoff. E, this is called evaporation. F, it is essential to life on earth. Right? बेटा ये 5 सेंटेंसेस हैं. आपने ऊपर ये द वाटर साइकिल ये जो ब्लॉक है इसमें खाली जगह छोड़ी गई है. आपने इनको इनके अंदर पुट करके आप इनको मुकम्मल करना है. राइट? आर यू रेडी? टाइम इज ओवर. आई एम सीइंग ऑन स्क्रीन 8:30 हो चुके हैं, लेकिन अगर आप जल्दी से इसको कर ले तो ये हमारा मुकम्मल हो जाएगा. चलिए, लेट्स डू इट विद इन शॉर्ट टाइम. ओके, विद इन नो टाइम. बल्कि द वाटर साइकिल इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज एसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ. ओके, ये ऑलरेडी 1 आपके लिए कर दिया गया है. जल्दी से देखिए. द वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड सीज इज हीटेड बाय द सन एंड इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर. द वाटर वेपर राइजेस इनटू द एयर. राइजेस इनटू द एयर. ये जो हवा में ऊपर वेपरेशन होती है तो इसको आप इवेपोरेशन कहेंगे. राइट? दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ये ई जो है, ई को देखिए सर. ठीक है, आपकी स्क्रीन पर भी है. 1 के लिए एफ है और 2 के लिए ई. दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. आप इसमें लिख सकते हैं. The water vapor rises into the air. This is called evaporation. Number 2. The water vapor is cooled as it rises and is changed back into tiny drops of liquid water. It is called condensation. Condense नहीं होता उसी से. Condensation. Next है clouds are formed. Clouds are formed and they are blown inland by the wind. Clouds are formed. They are blown inland by the wind. Clouds, next day, clouds get heavy and water falls back to the earth as rain or snow. Okay, and it is called precipitation. Okay, and the last is rainwater and melted snow are taken by rivers back to the sea, and it is called run off. Okay beta, so thank you so very much. Screen पर मैंने उनके जो है वो